प्रेशर बनता है अब क्योंकि मौके नहीं मिल रहे हैं और जब मौके मिल रहा है इस तरह की टूर पे आप ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रहे, तो प्रेशर बनेगा युगवेंद्र चहल पे? देखिए, प्रेशर तो बनेगा क्योंकि कुलदीप भी हैं और युजवेंद्र चहल भी हैं। चहल को कल एक बड़ा अच्छा पिछले मैच में कल माफ़ कीजिएगा, पिछले मैच में एक बड़ा अच्छा मौका मिला था, लेकिन जिस तरह से 3 ओवर में उन्होंने 36-38 रन खाए और उसके बाद उनका पूरा बिगड़ गया, पूरा बॉलिंग एनालिसिस उनकी बिल्कुल बिगड़ गई और बहुत पेडेस्ट्रियन दिखे। देखिए, चहल के साथ मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, ये बड़ी समस्या है। फील्डिंग बिल्कुल नहीं कर सकते वो और बहुत कमज़ोर फील्डिंग का मुज़ाहिरा उन्होंने आज तक किया है और ये बहुत बड़ी समस्या है। जब आप एक वर्ल्ड कप में खेलने जाते हैं और एक बॉलर को भी लेकर जाते हैं तो आप मिनिमम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि आपको एक सिटर कैच मिलेगा, तो एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, लेकिन आप एक पकड़ेंगे 10 में से तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी और ख़ासकर तब जबकि ये आप ही एकमात्र नहीं हैं जो वहाँ कुछ कर सकते हैं। और ये जो पुराने आंकड़े होते हैं ना अनिल, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उन्होंने इसमें अब इतने विकेट लिए, 2 साल में इतने लिए, 3 साल में इतने लिए, उससे नहीं बात बनती। बात इस बात बनती है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। बहुत रस्टी हो गए आप, पुराने आंकड़े आपके काम नहीं आ रहे। थोड़े दिनों में ऋषभ पंत के खिलाफ आवाज़ उठने लगेगी कि ठीक है, इन्होंने कभी बनाए होंगे, अभी नहीं बना रहे। तो मेरे ख्याल से उनको करके दिखाना होगा, कुछ करना होगा, उनको विकेट लेनी होगी और आज का मैच अगर धुल गया तो एक अच्छा मौका उनके हाथ से निकल गया, समझिए। मंजिल मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बिल्कुल, क्या बड़ी बड़ी नाज़ुक है ये सफ़र और मंज़िल बहुत दूर है। संजू सैमसन के लिए ये दूरी बढ़ती जा रही है। अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर टीम में जगह नहीं मिलते। कैसे दिखते हैं कनन? आज थोड़ा सा अनलकी रहे। पिछला मैच बड़ा अच्छा खेले थे, आज ड्रॉप हो गए। तो मेरे ख्याल से ऐसी चेंज वाज नॉट वारंटेड, बट स्टिल मैनेजमेंट मस्ट हैव गॉट समथिंग ऑन द माइंड। तो मैं सोचता हूँ एक आधा चांस और देना चाहिए। ही इज़ अ गुड प्लेयर, तेज़ खेलते हैं, तो उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। बट 2 विकेट कीपर का एक मैच में खिलाना वैसे बनता नहीं है। Mali, we had a conversation in that room where we were sitting together, and you were discussing about how outfield plays an important role. So I want the listeners to also know about it because you beautifully explained. You see, when a ball is hit, unless it is taking the aerial route, if it is going on the ground surface, then in that case it is very important for the ball to travel at a pace whereby you can not only gauge your singles and doubles, but you can also think of scoring a four. Now, if the outfield is slow, if the landscaping is done in a manner in many grounds where the outfield remains slow or even flat, it becomes a little more difficult to score runs. And it can happen because of the climatic conditions also, because of the weather conditions also. If it has rained heavily, the outfield has seen downpour for say 3-4 days, then the ball gets stuck to the grass there and the watery grasses. Also, it soaks water and then becomes difficult for the bowler to bowl. All these factors do play. Now the newly made fields have a very well laid out drainage system. So when the outfield is wet, the drainage system drains it out. Because there are many. See, for example, if you look at the grounds in Dharamshala, in Mohali, some of the later grounds which came later, you will find that these outfields are much better managed in terms of weather conditions, in terms of exigencies of weather, etc.
बिल्कुल, बहुत कुछ हम रणनीति लेके मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का इंद्र देवता हम पर बरसे हैं, कर्नल बुपराज, ऐसे में टीम की सारी रणनीति, सारे कागज़ सिर्फ लैपटॉप पे रह जाते हैं, मैदान पे दिखाने का मौका नहीं मिलता। या आई फुली एग्री विद यू, पर फिर भी 20 ओवर का अगर मैच होता है तो थोड़ी सी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, जिससे हमने स्टार्ट किया था. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यू नो. We should adapt to these new conditions which are in front of us and give our best and try to win the match. Malay, if we see that if by chance we will get 20 overs, so what should be the approach for the team? To hit as hard and as high as possible and make quick runs so that there is a reasonable target there, difficult to achieve for the New Zealanders. Well, exactly. This particular pitch, Seddon Park, is generally not a lucky hunting ground for Team India. Let's also tell our listeners, India is got bowled out for 92 in 2019 on this particular track. They also scored a 347 1 year later when they came back at Seddon Park. But Ross Taylor hit a brilliant century and India were blown away in that particular contest. Colonel Bhupinder, when one looks at this kind of a venue, you know, it's a small ground. You don't have good memories of playing here. Does that somewhere affect the mind of the player when he goes down to play, or all these stats are generally left for commentary box and for statisticians? You actually, you know, have a look at these stats also. What you have to keep in mind is what is your strength today and what is the strength of your opponents. वो जब हम 82 92 पे जब कहीं आउट हो गए थे तो हो सकता है उधर उस टाइम बॉलिंग बड़ी अच्छी थी न्यूजीलैंड की. उस टाइप की बॉलिंग यहाँ पे है नहीं अभी. द बैटिंग इज़ गुड, प्लस वी हैव ऑल्सो गॉट ए फेयरली गुड टीम. थोड़ा सा बॉलिंग कमज़ोर है. ये जो स्टैट्स होते हैं, इसको अगर हम इसको छोड़ दें और आज के उसके ऊपर खेलें तो अच्छा रहेगा. अगर हम स्टैट्स के ऊपर खेलेंगे तो फिर श्योरली यू नो परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा. And Malay, we have seen, according to the static stats, we have seen that New Zealand has been performing really good since last many games. Yeah, they have been performing well, especially on their home grounds because of the conditions, because of their playing conditions and familiarity with the grounds. The way they manage their bowlers, the way their pacers take advantage of the bounce in the pitch, of the grass on the pitch. These are the things that they manage very well. You know, that there's no doubt about that. See, but as I heard Colonel Saab saying, it's very important for you to remember that you should be playing to your strength and you should not be playing to your weaknesses. You should be playing to your own team's strength and the weaknesses of the opponent's team. That is what matters. And they have been playing to their strength. So, at one point of time, even 347 is easily achievable for them. And at one point of time, for us, even 100 is unachievable for us. So it is a game where a lot depends on your familiarity with the conditions, with the ground, and appropriate selection. The people who are there playing for you should be suitable for the conditions and the ground in which you are playing. That is also very important. Colonel Bhupinder, when one also looks at New Zealand and the form that they enjoy at home, you know, last 13 ODI home games they have managed to win. Last 5 meetings with India, they have never had or never hit a speed breaker. What's that, you know, X factor that they bring playing at home, especially against good teams like India? वो they've got a tremendous team. आप उनके शुरू के 6 बैट्समैन आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है. wherever they are playing, whether they are playing in New Zealand or they are playing abroad, तो they generally play well. एक आधा ऑफ मैच हो जाता है तो हो सकता है टीम कोलैप्स हो जाए, बट अदरवाइज they are playing well and their bowling also, you know, is suiting their conditions. तो that way they've got a very balanced side. एंड आप देखोगे कि यही टीम जो सी है यही टेस्ट में भी उनका खेल रही है. टेस्ट में भी ऑलमोस्ट नंबर 1 नंबर 2 में ये लोग रहते हैं. सो दे प्लेयर्स आर वेरी गुड. Well, not great news coming in from this particular routing. The game has been called off. The umpires had the final word on this particular contest. Both the skippers, time for handshakes. That's going to come there pretty soon. And clearly this particular match not going as India's expectations of bouncing back in this particular series. New Zealand too hope to get on top of that Super League table. But that's not working for New Zealand. They'll have to wait
and take it to Christchurch on the 30th of November. But overall, when one looks at the two games that we have seen, little bit of batting that we saw in the Indian batters coming out to bat, what's the sense that you make, Malay, especially looking at 2023? Well, it's been very good effort by the Indians, no doubt about that. But I must say that there are several chinks in their armor when it comes to bowling. Your bowling has not been up to the mark. Let us accept it. The batters did their best in the last match. Now the bowlers will have to outperform the batsmen of New Zealand in the next one. और ये कहना गलत नहीं होगा, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी. बस आज के मैच से लग रहा है हमारी दूरी बन चुकी है अनिल. Well, not much can be done. Well, not much can be done about what the weather has been and how the weather has have played a spoilsport. Thank my two guests in the studios there. It's time for me and Damini to say goodbye. Time now to hand over to the commentary box. Thank you very much. Kohli audaciously lost this one, which is taken on a half volley, and that ball has been sent racing to the fence for a spectacular six. All India Radio brings you live action of India-New Zealand cricket series on FM Rainbow, primary channels, LRS, FM relay stations and DRM. Don't forget, just tune in to All India Radio for all the action. For ball-by-ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. मैं हूं